Manya, hi Sachit, Soumya. Chalo, welcome to this lecture. How are you guys doing? You all will be writing CLAT this year, CLAT 2025, right? Hello Rudra, how's the preparation going? Come on, any one of you who would like to just have a brief interaction with me? Anyone? तैयारी कैसी चल रही है अभी क्या क्या कर लिया है और क्या क्या planned out है because see listen we are already in the mid of July, right? And we hardly have 5 months now. So what is the strategy for the next 5 months? How are you going to go about it? What are you doing for current affairs? What are you doing for legal current affairs? And mock score कितने हो रहे हैं? Mock score improve हो रहा है नहीं हो रहा? Mock score कैसे improve करना है? There are so many questions. ठीक है? So please feel free to interact with me if you have anything to say, if you have any questions. Let's just have a discussion for around 5-10 minutes and then we'll start the session. Okay? So yes, Soumya, I'm just allowing you to unmute. You can unmute yourself and you can, yes, go on, Soumya. Good evening, sir. Hi, Soumya, good evening. Go on. Sir, so when we attempt the SimCLAT questions, the GK questions that we have, I find them difficult to attempt and answer, even though I'm preparing current affairs on a daily basis. All right. And so how much you generally score in SEMCLATs in GK section? Sir, around 10 to 15. Around 10 to 15. ठीक है. And what is the general score in your average score in like overall average score in SEMCLATs? Sir, 40. 40. It's quite surprising because even if you're getting 10 from GK, what about other sections? What's happening in legal? Sir, maths is weak and rest of the subjects are still fine. चलो ठीक है. I'm not even considering maths. So in RC, CR and legal, you are only scoring 30 marks. Yes, sir. ये कैसे हो रहा है? सर क्योंकि अभी लाइक भी आई हैव स्कूल एग्जाम्स गोइंग ऑन तो प्रेशर सारा वहाँ है. नहीं 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 नहीं. That is not the reason. So let me tell you something. I've been mentoring CLAT aspirants. By the way, I'm from Gujarat National Law University, GNLU Gandhinagar, and I've been mentoring CLAT aspirants from past 10 years. And one thing that I've observed over the past 10 years is that those who make it to top national law universities, उनका RC, CR और legal बहुत ही अच्छा होता है ना? I'll tell you why. Because see, GK is a very difficult section. I mean, it's quite difficult to prepare for GK because the syllabus is there's no fixed syllabus, right? And current affair itself, preparing for current affair can be daunting task. तो करंट अफेयर अपने में बहुत फ्लूइड है, सरप्राइजिंग सेक्शन है, क्वेश्चंस इधर उधर से आ जाते हैं और ये सबके लिए उसी तरह का होगा. जैसे से फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर क्लैट 2024 का पेपर देखोगे तो उस साल का करंट अफेयर वाज इजी एंड ऑलमोस्ट एवरीवन वाज एबल टू स्कोर 15 16 17 18 ऐसे, है ना? इवन टॉपर्स जो था उनका भी 20 21 ऐसे हो रहा था. बट बाकी के सेक्शन जो थे ना, आरसी, सीआर और लीगल, इसमें कहीं ना कहीं स्पेशली सीआर में प्रॉब्लम हो गई थी एंड रैंक डिफरेंस जो वो सीआर और लीगल ने कहीं ना कहीं क्रिएट कर दिया था. ठीक है. सो प्लीज मेक श्योर, दिस इज माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू दैट इन आरसी, सीआर एंड लीगल ये तीन सेक्शन को फोर्टिफाई करो, है ना? क्योंकि ये तीन सेक्शन में अगर स्कोर नहीं आ रहा है then probably you are not in the race. And score नहीं आ रहा है का मतलब कितना है? So I expect you all to at least get 20 plus in legal. 20 to 25 आपको legal में score करना है. अगर ये नहीं आ रहा है then what are the things that you have to do? Please go through previous year mock paper. कहीं से भी sectionals मिल रहे हैं, passages मिल रहे हैं, passage निकालो, question attempt करना start करो and देखो कि कहाँ mistakes हो रहा है. जो भी questions गलत कर रहे हो उन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करो, एक्सप्लेनेशन पढ़ो. एक्सप्लेनेशन से समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है, ये लीगल का फाइन पॉइंट मैंने मिस कर दिया था, या अच्छा मैंने ऐसा सोचा था बट दिस वाज द राइट रीजन. कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहां पे
रीजनिंग क्लैश करेगी, योर रीजनिंग वर्सेस द रीजनिंग व्हिच इज गिवन इन द एक्सप्लेनेशन. Such questions are your doubts, and you have to mandatorily approach your legal faculty with these doubts. अपने लीगल फैकल्टी को पकड़ोगे, सर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, पैसेज में यहाँ पे ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, मैंने ये आंसर करेक्ट किया है, आंसर में ये दिया हुआ है, ऐसा क्यों दिया हुआ है ना. स्टार्ट आर्गिंग विथ योर फैकल्टी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपकी रीजनिंग अच्छी होगी, अदरवाइज लीगल रीजनिंग अच्छी नहीं होगी. सी नो बडी कैन टीच यू लीगल रीजनिंग विदाउट मेकिंग यू आर्ग्यू. अगर मुझे भी आपको लीगल रीजनिंग पढ़ाना है तो सिर्फ मैं आपको टॉर्ट्स के प्रिंसिपल और कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल पढ़ाकर लीगल रीजनिंग नहीं बता सकता. You need to understand how to reason out things based on law. This is what is legal reasoning, right? तो आपको उसको पढ़ के समझ के अप्लाई करना आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है सौम्या, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ठीक है. सो मेक श्योर कि लीगल का जो सेक्शनल है, और देखो अगले 2 हफ्ते तक सिर्फ लीगल के सेक्शनल में प्रैक्टिस करो. हर दिन टारगेट करो कि 6 7 8 10 सेक्शनल तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, और देखो कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं. एंड अगर तुमने 10 दिन लगातार ये काम कर लिया ना सौम्या, आई कैन गारंटी कि तुम्हारे जो स्कोर है ना लीगल में, वो 20 टच करने लगेगा. सो डू इट फॉर 10 days फॉर लीगल, 10 days फॉर आरसी, 10 days फॉर सीआर, एंड विद इन अ मंथ यू विल सी योर स्कोर विल डबल. ठीक है, वो 30 दिनों के अंदर में तुम्हारा स्कोर जो है ना, ये तीनों सेक्शन का डबल हो जाएगा फॉर श्योर. 20 नंबर तुम्हारे लीगल में आ जाएंगे, और आरसीसीआर दोनों मिलाकर यू विल स्टार्ट गेटिंग लाइक 30 35. तो 50 55 60 के अराउंड जो स्कोर है तुम्हारे, ये तीन तीन सेक्शन मिलाकर आ जाएगा. एंड देन 10 marks जीके. अब देखो तुम्हारा स्कोर कहाँ पहुंच गया, यू हैव रीच 70. एंड जिस दिन से 70 स्कोर करने लगोगे, उस दिन से तुम टॉप 100 में हो. अभी योर रैंक मस्ट बी अराउंड 300 400. कितना रैंक आता है सौम्या? सर लास्ट वाले सिम फ्लैट में 180 था. 180 था. ठीक है, अभी इसको टॉप 100 में आना है कि नहीं आना है? आना है सर. आना है ना. तो उसके लिए बहुत ही देखो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है. इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल स्ट्रैटेजी दैट हैज वर्कड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मैं पर्सनली बाउच कर रहा हूँ उसके लिए. ये स्ट्रैटेजी काम करती है, और ये काम करते आई है. सेक्शनल्स उठाओ, एक टाइम पीरियड में सॉल्व करो, देखो कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जो डाउट्स है अपने फैकल्टी के साथ बैठ के रिजॉल्व कराओ. ठीक है, यही प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस. यस अध्ययन, गो ऑन. सर आप कोई बुक सजेस्ट कर सकते हैं अच्छी सी लीगल स्टडीज के लिए? या लीगल स्टडीज के लिए एज सच अभी के टाइम में कोई बहुत अच्छी बुक है नहीं, है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट व्हाट आई कैन सजेस्ट इज दैट गो थ्रू प्रीवियस ईयर मॉक्स, है ना. अब देखो मेरे से ज्यादा स्मार्ट तो तुम लोग ही हो. यू नो टेलीग्राम पे क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कितने सारे मॉक्स कहाँ कौन से चैनल पे मिलते हैं. एंड आई एम नॉट गोना नेम एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या कुछ भी. जस्ट सी फ्रॉम वेयर आर यू गेटिंग व्हाट. एंड उस पूरे मॉक को सॉल्व नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, पूरा मॉक एक साथ मत लगाओ. हो सकता है दूसरे मॉक में से तुम वो सेक्शनल उठा लो, लीगल का सेक्शन, और उसको सॉल्व कर लो, एंड जस्ट क्रॉस चेक इट विद द आंसर. सो उससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी. ठीक है, यस सर. तो बहुत सिंपल से सिंपल है, राइट. कहीं जाना नहीं है, कुछ ऑर्डर नहीं करना है, जस्ट गो टू टेलीग्राम, सी व्हाट ऑल इज अवेलेबल. कोई भी एक अच्छा ढंग का मॉक दिख रहा है, मॉक उठा के सॉल्व कर लो, अपने फैकल्टी के साथ बैठ के डाउट्स ले लो. ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? दीक्षा, दिया, दीक्षा, गो ऑन. हाउ टू improve रीडिंग स्किल्स? यस दीक्षा, गो ऑन. Hello, sir. हाय. Sir, actually, I'm having a problem in the reading skills. I'm not able to just read the passage fully in the particular time. तो हमेशा ही रीड करने में ऑलमोस्ट 15 मिनट्स लग जाते हैं, एंड देन क्वेश्चंस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. So what do you think is the answer to your question? बेसिकली रीडिंग करना चाहिए, बट लाइक इफ आई रीड, मैं जैसे नॉवेल्स रीड करती हूँ, सो पर्टिकुलरली अभी तो मैं फिक्शन नॉवेल्स रीड कर रही हूँ. तो आपको क्या लगता है, लाइक वो अच्छा होगा रीडिंग के लिए?
देखो यार, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन, रीडिंग स्पीड अगर इंक्रीज करनी है, देन यू नीड टू लर्न हाउ टू डू स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग क्या होता है ना, आप ऊपर ऊपर से देखते हो, पढ़ते हो, जल्दी जल्दी चीजों को अंडरलाइन करते हो जो पैसेज में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड देन यू मूव ऑन टू द क्वेश्चन। एंड जहां पे भी क्वेश्चन में वो रेलेवेंट पॉइंट लग रहा है कि अच्छा ये पैसेज के इस पार्ट से है, you again refer to the passage, you just read that particular part, and then you try to answer the question। एक ये चीज होती है। दूसरी चीजें होती है कि रीडिंग स्पीड ओवरऑल आपकी तब अच्छी होगी जब आप, यू आर अ वोरेशियस रीडर, अब रीडिंग आप करते आए। देखो, रनिंग स्पीड कैसे अच्छी होगी? जब दौड़ोगे ज्यादा से ज्यादा। स्विमिंग स्पीड कब अच्छी होगी? है ना? एक पेस Yeah. बॉलर है, उसकी स्पीड स्पीड इंक्रीज करनी है, कैसे करेगा? वो नेट प्रैक्टिस करके करेगा, राइट? सो दैट इज द रीजन हम हमेशा स्टूडेंट को कहते हैं कि यार एडिटोरियल्स पढ़ो न्यूज़पेपर के, तुम्हारे जीके में भी फायदा करेगा, और दूसरा रीडिंग स्पीड भी इंप्रूव होगी, वोकैबुलरी एनरिच होगी। ठीक है? तो ये सब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव होता है, ये अचानक से तुम एक हफ्ते करोगे तो नहीं होगा। लेकिन जो दूसरा स्पीड रीडिंग टेक्निक्स है, स्टार्ट डूइंग दैट, उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करो कि स्पीड रीडिंग कैसे करते हैं पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में। हमेशा पैसेज को अंडरलाइन करके करो, ऊपर ऊपर से देखो क्या क्या है, ट्राई टू गेट द जिस्ट ऑफ द पैसेज एंड देन स्टार्ट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन। और अगर Okay. टाइम मैनेजमेंट इज एन इशू, तो उसके लिए भी सेक्शनल्स करना है। देखो, सेक्शनल जब तुम अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे ना, तो हर स्टूडेंट के लिए स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होती है। सो फॉर समबडी हु इज नॉट गेटिंग अ लॉट ऑफ स्कोर, है ना, उसका स्कोर लीगल सेक्शन में लेट्स से 30 में से आउट ऑफ 30 ही इज गेटिंग 10, इवन दो ही हैज अटेम्प्टेड 30 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम स्पीड तो छोड़ ही दो, यहाँ प्रॉब्लम है एक्यूरेसी की, कि मैंने 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और मेरे 10 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब 20 क्वेश्चन गलत है। ठीक है? तो इस सिचुएशन Yeah, में sir. सबसे पहले अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करो, देखो कि व्हाई आर यू मेकिंग दीज मिस्टेक्स, क्या कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, पैसेज अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, व्हाट इज द प्राइम इशू, जस्ट इवैल्यूएट दैट एंड फर्स्ट फोकस ऑन योर एक्यूरेसी, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्पीड। ठीक है? तो ये एक एक सेट ऑफ स्टूडेंट है जिनका स्कोर ज्यादा नहीं आ रहा है, एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है। दूसरा ये हो सकता है कि सर मैं 25 अटेम्प्ट करती हूँ, लेकिन मेरे 25 में से 23 सही हैं, बट ये 25 अटेम्प्ट करने में मुझे 50 मिनट का टाइम लग जाता है। दैट कैन ऑल्सो बी अ सिचुएशन। कुछ लोग होंगे ना जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि यार मेरा लीगल में 50 मिनट समय चला गया, इसलिए मेरा ओवरऑल स्कोर 50 आ रहा है। तो इस केस में आप क्या करोगे? आप सेक्शंस उठाओगे, फोन को सामने रखोगे, स्टॉप वॉच लगाओगे और ट्राई करोगे कि 35 मिनट्स के अंदर उसको करें। पहले 50 से उसको 40 करो, 40 से उसको 35 करो, 35 से 30 करो। ऐसे करके अपने आप को चैलेंज करो कि अच्छा ये वाला मॉक मैं 30 मिनट के अंदर सॉल्व करूंगा। ठीक है? इस तरह से आपकी टाइम जो है वो इम्प्रूव, टाइमिंग जो है वो इम्प्रूव होगी। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? Okay, sir. No, sir. एनीवन Thank एल्स you. हु हैज एनी डाउट? आर्यवीर, हाय आर्यवीर। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए? देखो पता है, आई मीन इट्स सो स्ट्रेंज कि आप लोग मुझसे ये पूछ रहे हो। हर वेंसडे एंड संडे मेरी क्लास होती है, आईएमएस पोर्टल पे लिंक भी आता है करंट अफेयर सेशन की, एंड उस पे मैं न्यूज़पेपर जनरली उस दिन का तो देख खोल के बताता ही हूँ कि दीज आर द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। बट आई गेस यू गाइस आर नॉट फॉलोइंग दैट क्लास, आप उसको क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो जो आईएमएस पोर्टल पे है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप उन क्लासेस में प्रेजेंट हो। वेंसडे 6:30 to 8:30 एंड संडे 4 to 6। ऑलराइट? दीपक, न्यूज़पेपर में क्या है ना कि कुछ कुछ सर्टन पोर्शंस होते हैं, देखो एडिटोरियल्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ लिया करो। एनीथिंग विच इज ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वो आपको देखना होता है। देन सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट है वो देखना है। ऐसे न्यूज जो कि प्योरली पॉलिटिकल हैं या सिटी स्पेसिफिक है, स्टेट स्पेसिफिक है, उसको इग्नोर कर सकते हो। क्राइम वाले न्यूज जो है जनरली उसको इग्नोर कर सकते हो। लीगल न्यूज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना? तो ये कुछ कुछ जॉनर्स होते हैं जो आपको कवर करने होते हैं। ऑलराइट, बाकी हाउ आर यू गाइस प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स?
करंट अफेयर्स के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हो? So देखो मैगजीन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंड वेरी सून आई थिंक बाय इन द मंथ ऑफ अगस्त यू विल हैव 6 month हाफ ईयरली मैगजीन. आईएमएस की तरफ से आपको ये हाफ ईयरली मैगजीन मिलेगा which will have all important news article from the month of January till June. ठीक है, जनवरी से जून तक का ये रहेगा. करंटली आई एम वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट. मैं एक मिनट थोड़ा आपको बता भी रहा हूँ. इनफैक्ट आई जस्ट शो यू अ ग्लिम्स ऑफ इट. सो ये देखो, जैसे से फॉर एग्जांपल नेशनल इश्यूज हो गए. तो नेशनल इशू में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, शिमला डेवलपमेंट प्लान, रेलवे एक्सीडेंट कवच जो है, ये सारे ऑलमोस्ट 60 70 80 टॉपिक्स हैं. 100 के अराउंड टॉपिक्स हैं नेशनल में, इंटरनेशनल में, लीगल में, ऐसे. एंड इन सबको कंपाइल करके विल गिव यू हाफ ईयरली मैगजीन. इसको अच्छे से अगर तुम कर लोगे, तुम्हारा करंट अफेयर का मोरलेस 70 80% जो है ना, सारा कवर हो जाएगा. ठीक है. सो स्टे ट्यून्ड, यू विल हैव इट इन द मंथ ऑफ अगस्त आई गेस. एंड इसमें देखो जैसे हमने कवर कैसे किया था, दिस वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. अब जैसे शिमला डेवलपमेंट प्लान है, सो व्हाई इट वाज इन न्यूज, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस शिमला डेवलपमेंट प्लान. लीगल बैटल एनजीटी के साथ जो हो रहा था उसके कॉन्टेक्स्ट में है. व्हाट इज एनजीटी, व्हाट इज द जुरिसडिक्शन ऑफ एनजीटी, व्हाट ऑल एक्ट्स इट कैन टेक कॉग्निजेंस इन. देन अमृत क्या होता है? अमृत इज a scheme of Ministry of Housing and Urban Affairs, centrally sponsored scheme है. Amrut 1, Amrut 2 overall, and then you will have questions on this. ठीक है. So don't worry, अभी current affairs का भी I understand लोगों को problem हो रही होगी, क्योंकि एक कोई थॉरो बुकलेट नहीं है जो पूरा पढ़ने के लिए, जो पूरा पढ़ के आप रिवाइज कर सको. So very soon you will have this thing. All right. Any other question? Any other doubt? Adhyan, you have a doubt? नो सर, गलती से हो गया. अच्छा, ठीक है, ठीक है. चलो, ऑल राइट. सो लेट्स स्टार्ट with important legal news from the month of June. The first news article that we have here is a judgment by the Supreme Court, wherein the Supreme Court held that ignoring precedent is a material error, and it recalled its judgment from 2022. ठीक है. अब ये सबसे पहले तो ये कि प्रेसिडेंट क्या होता है. सो एनीवन इन क्लास कैन टेल मी व्हाट इज अ प्रेसिडेंट? हैव यू एवर कम अक्रॉस दिस लीगल प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट? मायरा, गो ऑन. Yes, Myra, you can unmute yourself and you can speak. Sir, precedent, it means that the past judgments Past judgment. Past judgment of Supreme Court or higher court that are used by the lower courts to solve a case. These are binding on the lower court. So see, कभी भी lawyer को जब imagine करते हो तो what do you like, what picture comes to your mind? Somebody who is sitting in a chamber and he's surrounded by books from all the sides. So most of the books that are there in a lawyer's chamber, they are on case laws, है ना. cases जो है वो पढ़ने होते हैं. क्यों? क्योंकि ये सारे जो केसेस हैं वो सब जब फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसा केस आएगा तो वहां पे these cases can be applied, है ना. they can be referred to, and this is based on the principle of precedent. So precedent ये कहता है कि while deciding a case, the court must refer to previous judgments wherein the legal issue, the same legal issue or similar facts were present. ठीक है. तो सेम लीगल इशू हो या सिमिलर फैक्ट्स हो, इसके बेसिस पे अगर ऐसा कोई पुराना केस है तो उसको रेफर करना जरूरी हो जाता है. Why? Because this is based on the principle of stare decisis, that there has to be judicial discipline over a period of time. ठीक है. stare decisis, that the court must stand by its own order. So this is the rule of precedent. बहुत important है. In fact, सुप्रीम कोर्ट के सारे ऑर्डर्स हाई कोर्ट पे बाइंडिंग होंगे.
हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो उस टेरिटरी में जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं उस पर बाइंडिंग होंगे. ऑल दीज थिंग्स कम फ्रॉम द रूल ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है. What is the purpose? The purpose is to ensure consistency and predictability in the judicial system. Hierarchy of courts, as you all know, Supreme Court, High Court, and Lower Court. Now, what are the constitutional provisions? So, Article 141 of the Constitution, it stipulates that the judgments of the orders and judgments of the Supreme Court will be binding on all other courts and authorities. Why? Because it has the force of law. What are the exceptions to the rule of precedent? So the first thing is per incurium. So what is the meaning of per incurium? You can see here per incurium. So per incurium judgments are those judgments wherein the order or the judgment was passed without referring to relevant statutory provisions or binding precedents, binding judgments. ठीक है. तो अगर कोर्ट ने ऐसा कोई भी ऑर्डर दे दिया जो कि प्रीवियस जजमेंट, बाइंडिंग जजमेंट्स को बिना रेफर किए हुए था, तो वो पर इंक्यूरियम जजमेंट हो जाता है. एंड देन सच जजमेंट्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन द लेटर ऑन इन लेटर केसेस. ठीक है. इन सब्सिक्वेंट केसेस, देन सब्सिक्वेंट लेजिस्लेटिव चेंजेस. आज लॉ, जब पहले जजमेंट आया था तो लॉ कुछ और था, और अभी जब हम केस जब हियरिंग चल रही है तो उस टाइम लॉ कुछ और हो गया, तो लॉ ही चेंज हो गया है. Then distinguishing, the court may distinguish the present case from the previous case. Court जो है वो distinction create कर सकती है based on fact or question of law. ठीक है. I hope it is clear. Any doubt? Any doubt? चलो next, moving on. Supreme Court of India has constituted gender sensitization committee. Can you tell me who has been appointed as the chairman of this gender sensitization committee? Who is the chairman of this gender sensitization committee? Go on, guys. Justice Hema Kohli. ठीक है. यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है. It's a three-member committee. Justice Hema Kohli, Justice B.V. Nagartna, and Dr. Sukhda Preetam. All right. एक मिनट. Let me also open the chat box. Just hold on. Yes, Arshi and Aryaveer, you are absolutely correct. अच्छा, बाय द वे ये जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी जो है ये कौन से एक्ट के अंदर मैंडेटरी है? जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी. So it is mandatory for all public authorities, public organization, as well as big private organization to have gender sensitization committee. ठीक है. This is because of the mandatory provision under Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act, which is popularly known as POSH Act 2013. And POSH was enacted because Supreme Court in 1997 came up with the Vishakha guideline. Vishakha versus State of Rajasthan, बहुत ही important landmark case है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स को देखा और उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को कर्व करने के लिए गाइडलाइंस इशू किए थे. ठीक है. दीज आर पॉपुलरली नोन एज विशाखा गाइडलाइंस. ठीक है. ऑलराइट. सो यहां से आप देख लोगे पॉश का फंक्शन क्या ऑब्जेक्टिव है. सो इट इंटेंड्स टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एड्रेस कंप्लेंट्स. ठीक है. बाकी फंक्शंस ये सब तो ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. चलो, स्कारलेट जोहानसन sues OpenAI over unauthorized voice replication. Who is Scarlett Johansson? Anyone in class who can tell me who is Scarlett Johansson? पता है किसी को? Yes, Rujala, you are absolutely correct. She is a Hollywood actress. ठीक है. A famous celebrity. She is a celebrity, Bollywood actress, and अभी उसने केस फाइल किया था OpenAI
के अगेंस्ट. Yes, she played the role of Wonder Woman. Anyways, so अभी OpenAI क्या करता है? OpenAI का आपने सुना होगा, Chat GPT आया है, and many of you must have used it also. So Chat GPT came up with their Chat GPT 4.0, ठीक है? और इसमें वॉइस जो है वो भी है. सो जो वॉइस है, स्कारलेट जोहानसन का ये एलिगेशन था दैट वन ऑफ द वॉइस ऑप्शन कॉल्ड स्काई was exact was sounding exactly like her. Why? Because Sky was trained on the publicly available voice of Scarlett Johansson. अब किसी भी एक्ट्रेस का या सेलिब्रिटी का अगर आप वॉइस या उसके पर्सनालिटी को बिना उसके परमिशन के यूज करते हो तो उस केस में वायलेशन हो रहा है जीडीपीआर का. जीडीपीआर स्टैंड्स फॉर जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, एंड दिस इज अ रेगुलेशन ऑफ ईयू व्हिच इज एनफोर्सेबल इन ईयू. ठीक है, तो वहां जो पर्सनल डेटा है, जो प्राइवेट डेटा है, उसका आप यूज ऐसे नहीं कर सकते. या पब्लिकली अवेलेबल डेटा भी जो है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पर्सनालिटी, दैट कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट टेकिंग कंसेंट फ्रॉम दैट इंडिविजुअल. इस केस में ओपन एआई ने क्या किया? सो ओपन एआई ने पहले तो स्कारलेट जोहानसन से पूछा, उसने मना कर दिया. तो फिर बिना उसके कंसेंट के और बिना उसको कॉम्पनसेशन, फेयर कॉम्पनसेशन दिए हुए, दे यूज्ड हर पब्लिकली अवेलेबल वॉइस डेटा एंड दे ट्रेन देयर मॉडल कॉल्ड स्काई. ठीक है, सो पर्सनालिटी राइट्स जो है वो इन्फ्रिंज हो रहा है, जो डेटा प्राइवेसी है वो कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है. And on these grounds, she has filed a case against OpenAI. ठीक है, I hope it is clear. Now, what is important for you all? CLAT के हिसाब से क्या है important हो जाता है? So this General Data and Protection Regulation, which is a very famous law, 2013 में ही आया था ये, सॉरी 2018 में आया था ये, और ये बहुत important है. So quickly go through it. So this is enforced in European Union General Data Protection Regulation. It's a comprehensive data protection law. ठीक है, what are the key provisions? So the consent of the party must be there. Right to access has to be there. Right to rectification of data must be there. Right to erasure, that means right to be forgotten, is part of this regulation. ठीक है, data minimization, privacy by design has to be incorporated. Then data breach notification, in case अगर किसी का डेटा ब्रीच हो रहा है तो वो नोटिफिकेशन मिलना चाहिए. हमारे इट्स नॉट लाइक आवर कंट्री जहाँ पे आधार का पूरा डेटा ही गायब हो गया, नोबडी इज अवेयर ऑफ इट. ठीक है, देन देयर आर स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज व्हिच कैन बी इम्पोज्ड अंडर दीज रेगुलेशन. ठीक है, all right, so Dipti has a question. Dipti is asking कि अगर स्कारलेट जोहानसन ने केस फाइल किया तो ओपन एआई के अगेंस्ट क्यों फाइल किया, क्योंकि फाइनली तो उसका यूजर यूज कर रहा है. बट Dipti try to understand that the model Sky was not made by user. The model Sky was created by OpenAI without taking consent from uh, yes, Dipit, sorry, Dipit. So what I'm saying is कि यहाँ पे जो मॉडल है वो क्रिएट किया था ओपन एआई ने. ठीक है, वो यूजर ने क्रिएट नहीं किया, तो इसलिए ओपन एआई की गलती है. इज इट क्लियर दीपित? चलो नेक्स्ट. टाइम बार्ड सूट मस्ट बी डिसमिस्ड इवन इफ plea of limitation isn't raised as defense. Now who is going to tell me what is a time barred suit and which law we have which limits the duration within which a case can be filed? Come on, raise your hands. So what do you understand by time barred suits? Anyone in class? किसी को नहीं पता है? चलो I'll quickly explain. हाँ, Dipit, go on. Arivir, please unmute yourself and answer the question.
Sir, a time barred suit is any suit which is filed, but after the statute of limitations has been expired. And what is limitation? It is basically a time period that after which, if you cannot file any case against it because the law believes that, well, it only protects the vigilant citizens. ठीक है. All right, Dipit, do you have anything to add to it? नो सर, मेरे को वही बोलना था जो इसने बोला. ठीक है. So, as rightly pointed out by Aravi, time barred suit is a suit which has been barred by time, which was not filed within the stipulated limitation period given in the Limitation Act of 1963. So just see here, Limitation Act of 1963. So ये जो Limitation Act है, ये provide करता है एक time period जिसके अंदर ही आप case file कर सकते हो. I'll just give you illustrated through one example. So let's say, for example, you had given some money to your friend, and your friend promised you to give it back to you like within 10 days. But 10 दिन के बाद वो friend आपका दिखता ही नहीं है, वो गायब हो जाता है after 10 days. So what legal remedy you can take? So you can probably file a suit against him for recovering the money. ठीक है? But आपको लगा कि नहीं यार छोड़ो, दोस्त है क्या, केस फाइल कर. ठीक है? फिर आप उसको छोड़ देते हो, भूल जाते हो. However, after 5 years, you intend to file a case against him. Can you do that? The answer is no. When you will file a case, the court will ask you that what were you doing from past 5 years? Why didn't you file the case before? है ना? So इस केस में आपके पास क्या आंसर रहेगा? कोई आंसर नहीं रहेगा. कोर्ट आपसे कहेगा कि लिमिटेशन पीरियड में you were supposed to file case within 3 years. What were you doing from 5 years? ठीक है? So the law states that the one who sleeps over his rights loses his right. जो अपने राइट को ही के ऊपर सो रहा है, जो उस पे कोई एक्शन नहीं ले रहा, he loses his right. ठीक है? Is it clear? So ये limitation period is different for different kind of cases. For general matters, it is 3 years. For property matters, immovable property matter, it is 12 years. ठीक है? So once a suit is time barred, the action cannot be taken. The case cannot be admitted by the court. And the court has this duty to dismiss the case even though the defense of limitation was not pleaded. Okay, so this is what was held in this case. Chalo, next. PMLA accused who has spent half of maximum sentence as under trial can be given bail under section 436A of CRPC. Now what is a bail? First tell me that. What do you mean by bail? What is a bail? Anyone in class? Have you ever come across bail? सर, पैसे दे के जो क्रिमिनल होता है उसको लाइक जेल से निकाल लेना, बट लीगली मतलब कैसे बताऊं? भगा के नहीं, लीगली, राइट? Dipit? हाँ जी सर, मतलब इट्स बेल इज बेसिकली सर, इफ अगर क्रिमिनल ने कोई लाइक बहुत ज्यादा हैवी सेंटेंस, हैवी क्राइम नहीं करा होता, तो उसको कोर्ट एक बेल ग्रांट कर देता है कि तुम इतने टाइम के अंदर हमें इतने पैसा दे दोगे और तुम इतना लाइक सोशल वर्क भी कर दोगे या फिर तुम्हें कोई पनिशमेंट दे देंगे, तो तुम्हें जेल जाने से रोका जा सकता है. मतलब जो उनका सेंटेंस जो कोर्ट देता है कि तुम्हें इतने सालों की जेल होगी, वो तुम्हें हटाया जा सकता है. मतलब अगर तुम इसके एक्सचेंज में उस पर्टिकुलर पैसे के All right, मतलब पैसा दो बाहर जाओ. Is it that kind of scheme? Dipit? Yes, Arshi, go on. सर बेल का मतलब है कि आप किसी भी एक्यूज को ट्रायल के पीरियड के अंदर टेम्परेरीली रिलीज कर देते हो उस पे कुछ ग्राउंड्स पे, कुछ स्पेशल रीजंस की वजह से. ठीक है, स्पेशल रीजन हो नहीं हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट जो पॉइंट्स आपने मेंशन किए वो एकदम करेक्ट है. सो देखो, दो चीजें होती हैं. जो पर्सन हु इज इन कस्टडी,
इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया अंडर ट्रायल, द पर्सन हु इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, ट्रायल बाकी है उसके अगेंस्ट, और दूसरा हो गया कन्विक्टेड पर्सन। कन्विक्टेड मतलब कोर्ट ने उसको सजा दे दी है और इसलिए वो अपना whatever sentence has been given, he is undergoing through that. So bail is granted to a person who is an under trial, ठीक है, who is accused of a crime, पहली चीज। So it is the temporary release of a person from custody, temporary release of an under trial from custody. You can just read it here. और जो पैसे वैसे की बात है ना, वो सब conditions होते हैं attached to bail, that is not bail itself. So these are known as bail bond, and bail bond जो है वो मैंडेटरी नहीं है, कभी कभी कोर्ट उसको वेव ऑफ भी कर देती है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि पैसा दे दिए और या सोशल कंडीशंस को कोर्ट कुछ भी अटैच कर सकती है। So that is secondary. What we need to understand is that bail is temporary release of an under trial from the custody, ठीक है, clear? अब there are different kinds of bail. पहले तो ये समझो कि there are two kinds of offenses. One is bailable offense and the other one is non-bailable offense. So anyone in class who can tell me what is a bailable offense and what is a non-bailable offense? Anyone? What is a bailable offense? Yes, Adhyan. सर बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसके अंदर हमें बेल मिल सकती है, जैसे अगर हमने कोई थेफ्ट या फिर कुछ करा हो। एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें हमें बेल नहीं मिल सकती है, हमारे अक्यूज मतलब हमें अगर हम प्रूफ हो जाते हैं हम गिल्टी है, जैसे डाउरी डेथ के केस में। All right. So what do you think? Murder is a bailable offense or non-bailable offense? सर नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो क्या मर्डर के अक्यूज को बेल मिलता ही नहीं है? Is it सर so? मिलता है ग्राउंड्स के बेसिस पे अलग अलग। Okay. So in that case, non-bailable offenses में भी बेल मिलती है, right? यस सर। So in that case, what is a bailable offense? Anyone else who would like to answer this question? क्योंकि ये सब बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल है, ठीक है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, right? Now, what is a bailable offense? So bailable offense is an offense where getting a bail is a right. That means कि पुलिस अगर आपको अरेस्ट करेगी और वो बेलेबल ऑफेंस है तो तुरंत आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बेल इज अ राइट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनीवन्स डिस्क्रिशन कि मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ये वाला नहीं है, मिलेगा ही। व्हाई? बिकॉज इट्स अ राइट, you can claim that right, you can exercise that right. So in case of bailable offense, the person has to be released, whereas in case of non bailable offenses, there is a discretion on part of the court to whether grant the bail or to keep the person in custody. Again, is it clear now? यस सर। ठीक है, तो नॉन बेलेबल में क्या होगा, आप कोर्ट में बेल फाइल करोगे और कोर्ट जो है वो फैक्टर्स को देखेगी कि अच्छा क्या केस है, अक्यूज का रोल क्या था, अक्यूज के पास कितना फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल पावर है, मसल पावर है, कल को कहीं भाग तो नहीं जाएगा, ठीक है, कहीं विटनेसेस को इंटिमिडेट तो नहीं करेगा, एविडेंसेस को टैंपर तो नहीं करेगा। So there are set of factors that the court will look into, and if the court is satisfied, then only the court will grant bail to that accused. Otherwise, the bail will be denied. अभी आप देखो अरविंद केजरीवाल वाले केस में, he is behind the bar. I am pretty sure that you all are aware of it. पता है कि नहीं पता है? अरविंद केजरीवाल is behind the bar. नहीं पता है क्या? पता है सर। All of you are aware of it, ठीक है? So in this case, आप headlines daily check कर रहे होगे कि सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट has denied bail to केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट में बेल की हेयरिंग चल रही है, तो उसका मतलब क्या है, the court will first look into the case. If the court is satisfied, then only the court will grant bail to him. अभी मनी लॉन्ड्रिंग केस में उसको बेल मिल गया,
However, CBI वाला जो केस है, CBI ने उसको अरेस्ट करके रखा है. That is why he is still behind the bar. Now, court earlier during the time of campaigning, जब election चल रहा था, तो उसको interim bail दिया था. So interim bail is a kind of bail. ये देखो यार, there are different types of bail. One is regular bail. Is my screen visible? Is my screen visible, guys? Yes, sir, it's visible. ठीक है. So यहाँ देख रहे हो ना, there are different kinds of bail. You have regular bail, which is granted to a person who is under arrest. Interim bail is temporary release for a specific period and for a specific purpose. जैसे केजरीवाल के केस में क्या हुआ था? He was out on bail till 2nd of June for campaigning. He was not allowed to discharge any functions of the chief minister of Delhi. तो interim bail था. Anticipatory bail is a kind of bail which a person gets before the arrest. So if he is anticipating arrest in a particular case, he can file for anticipatory bail. Then you have statutory bail. So statutory bail is a bail that a person gets because of a statutory provision. Yes, Dipit, you have a question? So bail के टाइम में अगर कहीं भी भाग गए तो bail तुरंत कैंसिल होगा और authorities will arrest you again, and after that getting a bail is next to impossible. ठीक है, चलो. Bail can be cancelled by the same court. Arshi, go on. What is your question? सर एक बार एंटिसिपेटरी बेल एंड इंटरिम बेल फिर से बता दीजिए. ठीक है. So anticipatory का मतलब क्या होता है आर्शी? Anticipate करना, right? When you expecting something. So bail के context में क्या expect कर रहा होगा? कोई arrest, right? Arshi, are you there? यस सर, यस सर. है ना? So when a person is anticipating arrest, in that case he can approach the court before. अभी वो arrest हुआ नहीं है, उसको लग रहा है कि वो arrest होगा, तो वो कोर्ट पे पहले ही पहुंच जाएगा, ये कहते हुए कि I will cooperate with the investigating authorities, please don't arrest me. So the court may grant him anticipatory bail. और उस केस में क्या होगा? The moment when the authorities will come to arrest him, he will show his anticipatory bail and the authorities will not arrest him. Interim bail, on the other hand, is granted to a person who is already in custody and he is released for a specific purpose for a specific time. ठीक है? यस Is it सर, clear? यस सर. चलो. Any other question, guys? Next. So bail can be cancelled by the same court. अच्छा, इसमें एक और चीज ध्यान ये रखना होता है कि the bail becomes a right if the under trial has undergone half of the maximum punishment prescribed. तो अगर maximum punishment 10 साल है and if the person has undergone 5 years of imprisonment, then he has to be released on bail. Just hold on, I'm getting an important call. Yes. So is it clear now? Chalo, moving forward, bail can be cancelled by the same court which granted it if there are serious allegations. अब इसमें देखो non bailable offences में what are the factors for granting bail? So like I was explaining, nature and gravity of the offence is one important factor. अब किसी के अगेंस्ट रेप के चार्जेस हैं, मर्डर के चार्जेस हैं, अक्यूज का रोल बहुत सीरियस है उस पूरे केस में, क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, तो क्या कोर्ट उसको बेल देगी? द आंसर इज नो.
ठीक है. However, if the allegations are minor, the offense for which he is arrested is not a grave offense. तो वहां बेल मिलने के चांसेस ज्यादा हैं. रिस्क ऑफ विटनेस टैंपरिंग, रिस्क ऑफ रीऑफेंडिंग. पता चला अगर मैंने छोड़ दिया बेल पे, अगर कोई आउट है, द सेम पर्सन गोज आउट एंड कमिट्स अनदर क्राइम, तो वहां पे भी प्रॉब्लम है. तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं उसको कोर्ट ध्यान में रखेगी एंड देन फाइनली द बेल विल बी ग्रांटेड और डिनाइड. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट, सेक्शन 494 IPC, friends relatives can't be held to have common intention for offences of bigamy by mere presence in second marriage. Supreme Court. Now, what is the offense of bigamy? First, tell me that. RAV, would you like to attempt it? So Sir, can when you you repeat the marry, question? What is bigamy? Shaurya, go on. sir, when you marry while your first marriage is still in continuation, and it is still legal. So basically, for example, your previous spouse has not died, or the divorce has not taken place, and you marry for a second time. So that would constitute to an offense of bigamy. But Muslims can have 4 wives. Sir, yes, they can, but it is restricted in the IPC or now the Bharatiya Nyaya Sanhita. So even though their religious text might allow it, it is illegal in the Indian state. So is it legal or illegal? Muslims It is having 4 illegal. wives. It is illegal. It is illegal. Are you sure Sir, about it? हाँ जी sir. Acha. Muslims are not governed under the Hindu law, and the Hindu law states that bigamy is illegal. Yes. But the So bigamy is still an offense in the IPC or BNS. So bigamy is an offense provided bigamy is illegal as per the personal law, right? So for Hindus, for Christians, for Parsis, for under those personal law where bigamy is unlawful, is illegal, the second marriage is void. In those cases, bigamy is a criminal offense also. However, if the personal law allows bigamy, in that case, it is not an offense punishable under IPC. ठीक है, इज इट क्लियर. इनफैक्ट इस पे केस भी हुआ था, शर्ला मुद्गल, है ना. शर्ला मुद्गल वाले केस में क्या हुआ था? सो अ हिंदू कन्वर्टेड टू इस्लाम जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू हैव मोर देन वन वाइफ, है ना. बोथ द वाइफ्स वर हैप्पी विद इट, उनको प्रॉब्लम नहीं थी, बट स्टिल ही वाज कन्विक्टेड. व्हाई? बिकॉज by willfully converting to Islam just to contravene the law, just to escape the law, was not allowed. ठीक है. बाइगमी वैसे होता क्या है? सो अंडर आईपीसी, एज यू कैन सी हियर, बाइगमी इज द एक्ट ऑफ मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ स्पाउस एंड व्हेन द मैरिज इज स्टिल वैलिड. सो डिवोर्स नहीं हुआ, स्पाउस जो है वो जिंदा है, ठीक है, और फिर भी आप किसी और से शादी करो, देन दैट इज द ऑफेंस ऑफ बाइगमी. क्लियर. एंड बाइगमी इज अ पनिशेबल ऑफेंस ओनली व्हेन द सेकंड मैरिज इज वॉइड अंडर द पर्सनल लॉ. तो ये ध्यान रखोगे आप. ठीक है. अब इस केस में क्या हुआ था कि दोज पीपल हु वर प्रेजेंट एट द मैरिज सेरेमनी, दे वर आल्सो हेल्ड लायबल. आई मीन उनके अगेंस्ट भी केस फाइल हो गया था, बिकॉज इट वाज आर्ग्यूड दैट दे हैड द कॉमन इंटेंशन फॉर द ऑफेंस ऑफ बाइगमी. सो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, just because they were present in the marriage ceremony does not mean that there is common intention. Now again, यहाँ पे जब common intention की बात हो रही है, so there is another criminal law का concept which comes into picture, which is the concept of common intention under section 34 of IPC. So what is common intention? Anyone who can tell me what is common intention? पढ़े हो आप criminal law में? Yes, sir. Go on, tell Sir, me. common intention is like when two or more people pre-plan something to do a offense and they have a common intention. क्या pre planning जरूरी है? Can common intention No, sir. It can be like, this sir, further? it can be like the people who have common intention, they can either group up or they can like
have individual. Like if I have to explain that someone, two people who don't, two people, individuals, they come to not come to know that Come they to an want to do agreement. an agreement that they want to do offense, that it can, that can be also common intention, or they don't have to come into agreement, they just do the commit the offense and commit the offense, and like they don't have to be in agreement also. No, there has to be agreement made up. So see, Oh, in very simple yes, terms, sir. probably in one line you can define what is common intention. Have you ever come across this phrase, partners in crime? कभी Yes, hashtag partners in crime देखा है इंस्टाग्राम पे? देखा ही होगा, राइट? सो ये जो पार्टनर्स इन क्राइम है ना, ये होता है कॉमन इंटेंशन. अब पार्टनरशिप कब होगी? व्हेन देयर इज एन अग्रीमेंट टू कमिट एन अनलॉफुल एक्ट. ठीक है? सो देयर हैज टू बी मीटिंग ऑफ माइंड. जैसे कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था ना, कंसेंसस एड इडम है, मीटिंग ऑफ माइंड है. सो वहां पे लॉफुल पर्पस के लिए अगर मीटिंग ऑफ माइंड है तो शायद कॉन्ट्रैक्ट हो जाए. अगर अनलॉफुल पर्पस के लिए मीटिंग ऑफ माइंड है तो क्या होगा वो? तो कहेंगे कि कॉमन इंटेंशन था. लेट्स से ए एंड बी प्लान्स टू किल सी. अब इसमें क्या है? ए विल गो एंड गेट द पॉइजन एंड बी विल मिक्स इट विद सीज फूड एंड सर्व हिम. तो यहाँ पे दो बी हैज फाइनली सर्व द पॉइजन फूड टू सी, बट इन दिस केस ए विल आल्सो बी, ए इज इक्वली लायबल फॉर द मर्डर ऑफ सी. क्यों? क्योंकि देयर वाज प्री मीडिएशन, देयर वाज मीटिंग ऑफ माइंड टू किल सी. तो यहाँ पे ए एंड बी दोनों का कॉमन इंटेंशन था. ठीक है? टू किल सी. अब एक और सिचुएशन देखो कि बोथ ए एंड बी वांटेड टू किल सी. सो ए भी पॉइजन लेकर आता है और सी के खाने में मिला देता है, एंड बी भी पॉइजन लेकर आता है और सी के खाने में मिला देता है, एंड सी की डेथ हो जाती है. कैन इट बी सेड दैट देयर वाज कॉमन इंटेंशन ऑन पार्ट ऑफ ए एंड बी बोथ? सर प्री प्लान नहीं था तो फिर नहीं हो. क्या? सर अगर प्री प्लान नहीं है तो फिर नहीं कोई हो. मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, दोनों को पता भी नहीं है कैसा हो रहा है, तो क्या कॉमन इंटेंशन है? बट बोथ ऑफ देम हैड द इंटेंशन टू किल सी. What do you think? Arivir, what is your answer? Adhyan, I'm still a little perplexed about it. So it won't be an offense under the Muslim law, like Section 494. it won't be an offense under? Section 494, like bigamy. नहीं नहीं, मैं ये अभी एग्जांपल जो दिया था उसके कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ. कॉमन सर इंटेंशन, इंटेंशन नहीं है. कॉमन इंटेंशन नहीं है. क्यों नहीं है आरवीर? So because there was no meeting of minds. Yes, because there wasn't meeting of minds. So such kind of situation comes under similar intention. Both A and B had similar intention to kill C. However, given the fact that there was no meeting of mind on part of A and B, hence A and B, it cannot be said that both A and B had common intention. तो ये ध्यान रखना है आपको. ठीक है? चलो थोड़ा पर्सनल लॉस का देख लेते हैं. हिंदू मैरिज एक्ट प्रोहिबिट्स बाइगमी, यू ऑल नो दैट. मुस्लिम लॉ ऑल्दो इट अलाउज पॉलीगमी. तो ये है. शल्ला मुद्गल केस इज इंपॉर्टेंट. यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कन्वर्जन to Islam for the purpose, for the sole purpose of contracting a second marriage is unlawful, and the person would still be guilty of bigamy. ठीक है? चलो, right to property. Right to property is currently part of which article? Yes, Arshi, go on. सर पता कैसे चलेगा कि कन्वर्जन जो हुआ था वो बाइगेमी के पर्पस के लिए हुआ था? अगर कन्वर्ट करने के 1 महीने के अंदर दोबारा शादी कर दी है किसी ने किसी और से, तो व्हाट डू यू थिंक इज द पर्पस ऑफ दैट कन्वर्जन? ओके सर. है ना? तो वो फैक्चुअल केस है. ऐसा तो हो नहीं सकता कि अचानक से आपको एक टाइम पर रियलाइज हुआ कि यार नहीं ठीक है, आई शुड कन्वर्ट टू इस्लाम, और तुरंत यू फेल इन लव विद समवन एंड देन यू आर मैरिड. थोड़ा सस्पेशन हो जाएगा ना सबको. यस सर. है ना? ऐसा है.
चलो अब आरशी टेल मी राइट टू प्रॉपर्टी कौन से आर्टिकल में? सर आर्टिकल 19F आई थिंक। 19 में हुआ करता था, अभी कौन से आर्टिकल? Sir, can I? यस यस गो ऑन. Sir, it's under legal right 300A. अंडर विच वन? 300A. Yes, under Article 300A of the Constitution. Previously, it was under which article? पहले अमेंडमेंट से पहले कौन से आर्टिकल में था, एंड किस अमेंडमेंट ने इसको चेंज किया है? आर्यवीर, गो ऑन आर्यवीर. So please note it down. Previously, article right to property was a fundamental right given in Article 19(1)(f) of the Constitution. Sir, 44th Amendment. And yes, it was shifted to Article 300A through 44th Constitutional Amendment Act of 1978. तो ये आप याद रखोगे, इसको नोट करके रख लेना. Now this right to property has certain sub rights जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी recently explain किया. So what are these sub rights? So you have right to notice. So देखो, अगर गवर्नमेंट जो है किसी की प्रॉपर्टी को अक्वायर करेगी तो उससे पहले उसको नोटिस देना जरूरी है. The intent to acquire the property must be conveyed to the person, owner of the property. Then the owner of the property also has the right to be heard. He can protest against the acquisition of property. The authorities will have to come up with a reasoned order. ऐसा नहीं एक लाइन में order pass कर देंगे. They must come up with a reasoned order. The duty to acquire property is only for public purposes. ऐसा नहीं कि public किसी की प्रॉपर्टी को अक्वायर करके अंबानी को दे दिया, अदानी को दे दिया. That is not possible. Then right of restitution, that means if the purpose is not fulfilled, in that case the property must be given back to the owner. And if the property is acquired, then fair compensation based on market rates must be given to the person. Then right to an efficient and expeditious process. ऐसा नहीं कि 10 साल से लटका के रखते, ये भी नहीं है ना, जल्दी करना है, efficiently and expeditiously. Then right of conclusion is important. All right, is it clear to all of you? चलो, fundamental right to health includes customers' right to be made aware of quality of products. So Supreme Court in Patanjali case has said that the customer has a right to know about the products, ingredients of the product. अब तुम खुद सोचो, let's say you go to a shop and you buy a beverage, कोई fruit juice ले लिया. अब उस fruit juice में क्या ingredients हैं, क्या ये जानने का हक आपको नहीं है? The answer is yes. है ना? Why? Because it is you as a customer, it is your right to know about the ingredients. And only when you have this important information, then only you can make a rational choice. So this is part of right to information and right to choose. Both are important consumer rights. Okay? First thing. Second thing is that what if somebody has wrongfully displayed the information? झूठ बोला गया, intentionally deceive करने के लिए गलत चीजें लिखी गई हैं, तो उस केस में क्या होगा? So in that cases it will fall under unfair trade practices, and any kind of deception or fraudulent information, broadcasting of information is a punishable offense. ठीक है? पतंजलि आपको पता है इस तरह के काम में काफी ज्यादा उस्ताद है. तो पतंजलि ने कुछ ऐसा ही किया था. एक टाइम था जब कोरोना के भी दवाइयां लेकर आ गया था वो. ठीक है, कहा था कि कोरोना इससे ठीक हो जाएगा. पूरी तरह से it was absolutely wrong. ठीक है, तो उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट इज द राइट ऑफ द कंज्यूमर टू नो अबाउट द प्रोडक्ट. साइमल्टेनियसली द कंपनी हु आर एडवर्टाइजिंग, द पीपल हु आर एंडोर्सिंग इट, तो कल को कोई सेलिब्रिटी आके भी अगर उसको एंडोर्स कर रहा है तो उसको भी ये चीज बतानी होगी, उसको डिक्लेयर करना होगा कि वॉट एवर इंफॉर्मेशन दैट दे आर ब्रॉडकास्टिंग आर ट्रू, they are not false. And in case if they do not disclose the information, तो फिर
उनके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देयर हैज टू बी अ मैंडेटरी सेल्फ डिक्लेरेशन दैट मस्ट बी फाइल्ड बाय द एडवर्टाइजर्स एज वेल एज द endorsers, ठीक है, those who are endorsing the product with respect to the veracity, truthfulness of the information given in the product. ठीक है, is it clear? Any doubt? Any doubt? चलो next. Writ petition by employees against Air India not maintainable after its privatization. So first of all, against whom the writ petition is maintainable? Writ petition किसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं? फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। Yes, Aravind, you are absolutely correct. Writ petition for violation of fundamental rights can only be filed against state. Now, what is a state? The next question that comes to our mind is, what is a state? So, state is defined under Article 12 of the Constitution. और ये देखो आर्टिकल 12 में स्टेट का डेफिनेशन क्या है? सो गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, देन लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज। सो ये तीनों फर्स्ट थ्री तो काफी क्लियर है अपने में, है ना? जो चौथा है अदर अथॉरिटीज। अब अदर अथॉरिटीज में क्या क्या आएगा? इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म and time and again Supreme Court has tried to define it in so many terms and so many tests and all that. The most famous one is the test for determining the instrumentalities of state, which was propounded in the landmark case of Ajay Hasia versus Khalid Muhim. ठीक है? So Ajay Hasia versus Khalid Muhim में Supreme Court ने test of instrumentalities of state जो है वो pronounce किया था, और इसमें क्या कहा था? If there is financial assistance given by the state, or there is functional control over the entity, or there is functional character of the state, if the entity is performing governmental function, or the state has conferred monopoly over the entity, if there is deep and pervasive control over that entity, in that case the entity will be considered as state. ठीक है? एंड अगर ये सब नहीं है तो फिर वो प्राइवेट बॉडी और प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट जो रिट पिटिशन है वो हर केस में मेंटेनेबल नहीं होता। बहुत स्पेसिफिक केसेस यहाँ पे होता है, बट अदरवाइज नहीं होता। अब एयर इंडिया वाज अ गवर्नमेंट पीएसयू, हाउएवर रिसेंटली इट वाज प्राइवेटाइज्ड। ठीक है? सो आफ्टर प्राइवेटाइजेशन सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड that writ petition by employees is not maintainable against Air India. ठीक है? Is it clear to all of you? Any doubt? चलो, so that's all we have in today's lecture. ये important कुछ न्यूज आर्टिकल्स थे लीगल करंट अफेयर्स के, जो कि मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। If you have any doubt, you can raise your hand. कोई भी कंसर्न है, कुछ भी अगर आपको लग रहा है जो कि आपकी तैयारी से रिलेटेड है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा किस तरह से करना है, ये समझ में नहीं आ रहा कि मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं, टेंशन हो रहा है एग्जाम को लेकर, यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, यू आर फ्री टू आस्क क्वेरीज, है ना? आई एम जस्ट ड्रॉपिंग माई नंबर हियर। Do mention your center and your name. ठीक है? And you can text me on WhatsApp. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी दिक्कत है ना? So feel free to drop me a text. ठीक है? Any doubt? अभी कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? Anyone? अच्छा, Akshita has asked me one question. Any tricks for scoring more in GK? All right, there are two tricks. First thing is that एक तो रेगुलर रिविजन करो, ठीक है? वो रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग इज दैट मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग द पैसेजेस। जीके के क्वेश्चन में जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि पैसेज छोड़ के सीधा क्वेश्चन पे जंप कर जाते हैं। एट टाइम्स क्या होता है कि एक दो क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो पैसेज में छिपा होता है। ठीक है? ऑलराइट, सो वो बहुत ही जरूरी है। ऑलराइट, recording will be available or not?
ये मुझे नहीं पता यार, रिकॉर्डिंग के लिए यू विल हैव टू आस्क. ऑलराइट, चलो. ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच. चलो, गुड नाइट गाइस. Thank you, sir. बाय, गुड नाइट.